Good to see see you all. Um, okay, so as you all know, I have been teaching physics, and today we are going to start with the first chapter of science, that is laws of motion. So let me share the screen with you guys, and we can get started with it. I hope you are able to see the screen. And as we all know, we are going to start with the chapter that is laws of motion. Now, in this particular slide, you can see that few objects are moving, but you can also see that some objects are not moving. For example, the house is not moving, the fence is not moving. But whereas if you see bird is moving, that is, it is flying. A car and a motorcycle is running on the road. So इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है. And we are going to look at the laws which are associated to such motion. Now, you must be thinking, what is motion? अपने को सबको पता है, जो भी चीजें मूव करती है, अपन उसको बोलते हैं object are in motion. But let us try to understand what physics tells us the motion is. So here, we'll give you an example. एक simple सा example है. Before coming to the example in the slide, we can take an example around you. For example, if you just look around, you can see probably a sibling, probably your mother, your father. They must be moving. They must be going from one point to another, from one position to another. And hence, I say that they are in motion. Similarly, there's a person standing near this particular signal. If you can see, the signal is green. Now, we all know that when the signal is green, generally the car, it continues to move. So if you see, the car is moving. The person standing there is an observer, and he observes that the car is moving, meaning the car is in motion. Now we have to define motion. So how do I define motion? The motion is defined as a body is said to be in motion when it changes its position. कब बोलते हैं मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में है? We say the object is in motion. कब बोलेंगे उसको? When it changes its position. कब बोलेंगे? When it changes its position with respect to its surrounding. Now you must be thinking, ये with respect to its surrounding क्या होता है? With respect to its surrounding का एक simple concept है. For example, अगर आपका भाई एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग फ्रॉम बेडरूम टू किचन. नाउ व्हेन द ब्रदर इज गोइंग फ्रॉम बेडरूम टू किचन, बेडरूम में लेट अस से बेड है, वार्डरोब है, बेड, wardrobe, this all objects are part of the surrounding. What are they? They are part of the surrounding. So do you see, जब आपका भाई बेडरूम से किचन में जाता है, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स उसके पीछे पीछे मूव होते हैं क्या? नहीं, they are not moving. Those objects are stationary. The surrounding is stationary. Therefore we say that a body is said to be in motion. कब बोलेंगे वो मोशन में है? When it changes its position. क्या बोलेंगे वो मोशन में है? When it changes its position with respect to the surrounding. With respect to what? With respect to surrounding. So this is motion. We are going to take few examples before moving to the next part. मोशन का अपोजिट होता है, अगर मैं आपको पूछूं तो आप बोलोगे नो मोशन. बट एक्चुअली फिजिक्स में नो मोशन ऐसा नहीं होता. फिजिक्स में मोशन का अपोजिट होता है. एनी गेसेस? एग्जैक्टली, मोशन का अपोजिट होता है रेस्ट, जो हम लोग पूरे क्वारंटाइन के पीरियड में कर रहे हैं. So here we are going to see what is rest. Now
आपको आगे के स्लाइड्स दिखाने के पहले आई वांट यू टू गेस द फर्स्ट द डेफिनेशन एंड व्हाट डू यू थिंक मस्ट बी रेस्ट। अभी ये स्लाइड देखने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ। यू आर सिटिंग एट वन प्लेस, नेक्स्ट टू यू मस्ट बी हैविंग बुक। क्या वो बुक चल रहा है क्या? बुक के साथ पेन चल रहा है क्या? आपका बेड देखो जरा, वो हिल रहा है क्या एक जगह से दूसरी जगह पे? नहीं। आपका सराउंडिंग भी देखो, सराउंडिंग भी कैसा है? स्टेशनरी है। सराउंडिंग इज नॉट मूविंग। दिस मीन्स दैट surrounding is not moving. Also, the object which you are observing is also not moving. तो ऐसे object को अपन बोलेंगे object at rest. Object at rest. Everybody understood this? All right. Next. Now, if you see, मुझे ना रेस्ट को क्या करना है? रेस्ट को डिफाइन करना है। अभी रेस्ट को डिफाइन करने के लिए मुझे अलग एक्सप्लेनेशन उसका लर्न करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन डू वन सिंपल थिंग। आपको मोशन का डेफिनेशन याद हो गया? क्या है मोशन का डेफिनेशन? द डेफिनेशन ऑफ मोशन इज द बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अभी इसमें से थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना है? थोड़ा सा चेंज। नाउ आई वांट यू टू गेस। व्हाट डू आई वांट यू टू डू? आई वांट यू टू गेस। आप गेस करके मुझे बता सकते हैं कि मोशन का डेफिनेशन क्या होगा? इस सॉरी रेस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? इस मोशन के डेफिनेशन में ही थोड़े से चेंजेस करके यू विल गेट द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट। ट्राई इट आउट। आई विल गिव यू 30 seconds. All right. Yes. So let us see. The definition of rest goes as a body is said to be at rest. The body is said to be at rest. कब होगा वो रेस्ट में? When it does not change its position with respect to the surrounding. Motion में motion में the object changes its position. The object changes its position. But rest में क्या होगा? The object does not changes its position with respect to the surrounding. So if you see, definition of rest is the body is said to be at rest when it does not change its position with respect to the surrounding. All right. Now, so we have understood what is rest and what is motion. Now, what I am going to do is I'm going to give you few of the examples. In your mind, you have to work out and classify if those objects are at rest or at motion. So, the first example is a motorcycle. The first example is motorcycle. But अभी confusion है, motorcycle क्या कर रहा है exactly? We do not know. If it is parked, if it is moving, अपने को पता नहीं है. But मैं अभी आपको example में थोड़ा सा क्या करता हूँ? Changes करता हूँ. I say that a motorcycle which was moving looks at the signal which has turned red. Now, can you guess if the motorcycle is going to be at rest or at motion? Exactly, it is going to be at rest. Excellent. Next, the second example is the motorcycle looks at the signal which has turned green. What is that going to be? Is it going to be object at rest or object in motion? Amazing, it is going to be object in motion. अभी थोड़ा सा एग्जाम्पल्स है ना, उसको क्या करते इंटरेस्टिंग बनाते. चलो, the next example is river, maybe river Ganga. Very nice. River Ganga is an example of object in motion. But what if I build a dam?
Very nice. When I build a dam on a river, the flow of water is going to stop, and hence the river is going to be at rest. चलो और थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं. Let us say electrons. What do I have to say about electrons? Very nice. Some of you must be saying electrons are at rest. Some of you might say electrons are in motion. But actually electrons are in motion because electron क्या करते हैं न्यूक्लियस के बाहर गरबा खेलते हैं. We all know that, right? Chemistry में पढ़ा है electrons revolve around the nucleus. So electrons are in motion. अच्छा, what about Earth? What about planets? Excellent. Earth, planets, these all revolve as well as rotates around the sun. Therefore, we say that the planets are in motion. What if I say clock, clock, clock? Many of you must say clock is in motion. But no, this is a very interesting example. क्लॉक मोशन में नहीं है. अगर आप क्लॉक को देखोगे, क्लॉक दीवार पे लटका हुआ है. ये सब नो, clock is not moving. Clock is at rest, but the hands of clock are moving. Therefore, we say that the hands of clock are in motion, whereas clock is at rest. So we have seen that in motion we have seen two concepts. The first concept is the motion. The second concept is rest. Now, further moving, rest and motion. We have come across the definition. You have on the screen a definition of rest. What is the rest? How is rest defined as? A body is said to be at rest. कब बोलेंगे उसको rest में? When it does not change its position with respect to the surrounding. अभी इससे आप मोशन का डेफिनेशन ट्राई करो एक बार. चलो खुद से ट्राई करो. 1, 2, 3 together. The body is said to be in motion when it changes its position with respect to the surrounding. With respect to the surrounding मतलब surrounding में जितने भी चीजें हैं, they should be stationary. They should not move along with the object. So this is about motion and rest. Now further, we have a very interesting concept related to motion. Now my simple question to you is, अगर मुझे कुतुब मीनार देखना है, क्या देखना है? कुतुब मीनार. चलो मुझे बताओ कुतुब मीनार कहाँ पे होगा? कुतुब मीनार देखने के लिए आपको कहाँ पे जाना होगा? वेरी नाइस. मुंबई में तो नहीं ऑफ कोर्स. कुतुब मीनार इज इन नेशनल कैपिटल दैट इज दिल्ली. तो मुझे कुतुब मीनार देखना है तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा. मेरे भाई को कुतुब मीनार देखना है तो मेरे भाई को दिल्ली जाना पड़ेगा. एसएसटी सर को देखना है तो एसएसटी सर के लोगों को भी किधर जाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स दिल्ली जाना पड़ेगा. ये सब नो. सो कैन आई से for SST sir, for me, for you all, कुतुब मीनार एक ही पोजीशन पे है सालों साल. इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन. तो कुतुब मीनार कैसे हुआ? कुतुब मीनार हुआ रेस्ट में. कुतुब मीनार कैसे हुआ? कुतुब मीनार हुआ रेस्ट में. बट लेट अस से देयर इज एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट अर्थ पे नहीं है. एस्ट्रोनॉट लेट अस से स्पेस स्टेशन पे है, राइट? अभी जैसे ही वो स्पेस स्टेशन से कुतुब मीनार देखने का कोशिश करेगा, तो माय क्वेश्चन टू यू इज, वो कुतुब मीनार उसको रेस्ट में दिखना चाहिए या मोशन में दिखना चाहिए? करेक्ट. वो किस में देखेगा उसको? मोशन में देखेगा. व्हाट कुड बी द रीजन? वेरी नाइस. द रीजन इज द अर्थ इज रोटेटिंग एज वेल एज इट इज रिवॉल्विंग. तो अर्थ के साथ साथ कुतुब मीनार भी क्या करेगा? मूव करेगा. तो इफ यू सी, कुतुब मीनार एक ऑब्जेक्ट है. वो एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जर्वर मतलब मुझे रेस्ट में दिख रहा है. बट वही टाइम एट द सेम टाइम द एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में से उस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करता है, उसको वो मोशन में दिखता है. किस में दिखता है? मोशन में. सो एक ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर को रेस्ट में दिखता है. द सेम ऑब्जेक्ट अनदर ऑब्जर्वर
observes it in motion. This concept is called as motion is relative. What is it called as? Motion is relative. Now, what does motion relative mean? The motion is relative means that our body is moving for one observer and at the same time it is at rest for another observer. What is which motion at motion is relative? The motion in relative states that a body can be moving for one observer and at the same time it is at rest for another observer. Let us take an example which is in the presentation. So if you see, you can see an aeroplane. Inside the aeroplane, you have two persons sitting. Let us say the person is A and B. On the ground, there's person C, which is observing the plane along with the along with the people traveling inside it. So now here, observer C sees that जो A है, person C sees that जो A है, it is traveling inside the plane, जिसकी वजह से A is in motion. But at the same time, सेम प्लेन में बैठा हुआ जो बी पर्सन है, कौन सा पर्सन? बी पर्सन. बी पर्सन आगे वाले सीट को देखता है, मतलब ए वाले को देखता है. उसको क्या लगता है कि वो तो रेस्ट में है, वो थोड़ी हिला. सो हियर a person is in motion as per C, but at same time A person is at rest for observer B. Such phenomena or such activity tells us that a body can be moving for first observer. A body can be moving for first observer at same time दूसरे ऑब्जर्वर के लिए it can be at rest. So this concept is called as motion is relative. Motion is relative. What does relative mean? Relative means that the motion is observer dependent. What is motion? Motion is observer dependent. So if we have seen that, we have come across three concepts. The first concept is object motion का definition. The second concept is rest ka definition, and the third concept is motion is relative. Hello, SST sir. Yes, sir. Acha, now what I want to do is Uh, I want to ask students to write the definitions. So okay. so Okay. I can just instruct them, right? Yeah, yeah. You can just put All a right, video on. They can see you, all and right, then fine. you can. Okay. Um, student, we have definition on screen. You can quickly write the definition of motion. एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज अगर आपके पास मोशन का डेफिनेशन अभी फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या है सो फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज या एनीथिंग व्हिच यू कैन मेजर जो भी चीजें आप मेजर कर पाते हो डिवाइसेस से इंस्ट्रूमेंट से उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी फॉर एग्जांपल इफ आई से डिस्टेंस मैं इतना किलोमीटर भागा इतना किलोमीटर चला 10 किलोमीटर चला कैन यू मेजर डिस्टेंस exactly you can. So can I say distance is a physical quantity? Yes, distance is a physical quantity. Amazing. चलो can I say 5 मिनट हुआ लेक्चर होके 10 मिनट हुआ लेक्चर स्टार्ट होके can you measure time? Very nice, you can measure time, meaning time is also a physical quantity. Further, अगर मैं ऐसा बोला कि ना मैं अपनी मम्मी को ऐसे 5 किलो प्यार करता है does that make sense? No. Can you measure love? No, you can't measure love. So can I say love is an emotion, right? Can you measure emotions? Is there a device to measure emotions? Absolutely not. So can I say love, anger, hatred? Are these physical quantities?
Absolutely no, they are not physical quantities. So anything which you can measure, you have a proper device to measure a particular quantity is called as physical quantity. Now, physical quantities are of two types. How many types? Physical quantities are two types. The first type of physical quantity is scalar. What are the first quantities? Scalar quantity. What is the first type of quantity? Scalar quantity. What is the first type of quantity? Scalar quantity. And the second type of quantity is vectors quantity. What is the second type of quantity? Vectors quantity. What is the second type of quantity? Vectors quantity. So we have two types of physical quantities, scalar quantities and vectors quantities. अब ये स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अभी स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? So the definition says that the quantities which can be completely described by magnitude alone is called as scalar quantity. अभी इसका मीनिंग क्या हुआ? Let us take an example. मैं टाइम चेक किया, आई सी 4:30 हो गया. ऐसे नीचे देखा मैंने घड़ी पे एंड आई सी दैट द टाइम इज 4:30 पीएम. बट अगर मैंने इसे सामने देखा, सामने देख के मैंने टाइम चेक किया, तो ऐसा है क्या टाइम आगे चला जाएगा, 6 बजेगा? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ऐसे घड़ी पीछे देख के मैंने टाइम देखा, अपने पीछे बराबर से मुड़ के टाइम देखा, ऐसा हो गया क्या कि टाइम पीछे चला गया, 2 बज गया दोपहर का? दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? wherever I see, at any direction I see, ऊपर देखो, नीचे देखो, left देखो, right देखो, at any direction I see, the time is going to remain same. Meaning, time ये सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड करता है. 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 4:30. It just depends on what? It just depends on magnitude. It just depends on value. That is the reason why we say that these quantities are called as scalar quantity. These quantities मतलब कौन से quantities? The quantities which only depend on magnitude. The quantities which only depend on magnitude. उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता. So what are such quantities? मैंने first example दिया time. The second example is mass. मास कैसे मेजर करते हो? वेइंग स्केल से. किधर भी जाके देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, साइड में देखो, लेफ्ट में देखो, कोई भी डायरेक्शन में देखोगे, फिर भी आपका मास उतना ही रहेगा. 70 kg है तो 70 kg रहेगा, 38 kg है तो 38 kg रहेगा. This means that mass only depends on the value, that is 70 kg, 20 kg. That's it. So such quantities are called as scalar quantities, meaning the quantities which depend on the value, that is the magnitude. The next quantity is vector quantity. Now to see the vector quantity, what do you understand by vector quantity? Let us take a demonstration here. So now let me switch on the video so that you'll be able to see it. Which depends on the direction and the magnitude. It depends upon the direction and magnitude. So vector quantities are the quantities which depends or it possess magnitude as well as direction. And the example of vector quantities are force we just saw. And the second example is displacement. And the second example is displacement. So these are the scalar quantities and vector quantities. Let us quickly revise this. So here, the physical quantities are the quantities or anything which you can measure. And we have two types of quantities. First is scalars and second is vectors. Scalars क्या होता है? Scalars are the quantities which depends on the value, that is magnitude. And vectors कौन से quantities होते हैं? These are the quantities which
contains or which are described by magnitude as well as direction. So these are scalars and vectors. Moving on, the last part of this session, let us talk about the units. For example, जब भी आप ग्रोसरी में जाते हो, let us say you have to purchase sugar, ठीक है? अभी आप whenever you go to purchase sugar, आप शॉपकीपर को क्या बोलते हो? भैया मुझे 5 सेंटीमीटर का शुगर दो, ऐसा बोलते हो क्या? वेरी नाइस, क्या बोलते हैं? 5 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ शुगर, 1 लीटर बोलते हो क्या? नहीं, तो ये केजी, ये क्या हो गया? वेरी नाइस, ये केजी हो गया यूनिट, क्या हो गया? केजी यूनिट. सो वी हैव डिफरेंट यूनिट्स. केजी, ये अपने यूनिट देखा, विच इज एसोसिएटेड टू मास. लीटर किसके लिए? लीटर, वेरी नाइस, लीटर होता है वॉल्यूम के लिए. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सेकेंड किसके लिए होता है? Second is for time. So we have units which are associated to physical quantities. So a unit are mainly of two types. The first type is MKS system, yeah, MKS unit, and the second type is CGS system or CGS unit. So we have two systems. First is MKS system, second is CGS system. अभी ये MKS क्या होता है? MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड. MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड. MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड. एंड CGS मतलब, कैन यू गेस? अच्छा चलो गेस करने की कोशिश करो. मीटर CGS में बन जाएगा सेंटीमीटर. क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर. किलोग्राम CGS में बन जाएगा ग्राम. एंड सेकेंड रहेगा वैसे का वैसा. सो यूनिट्स आर MKS एंड CGS. अभी आप देखोगे मीटर किलोग्राम सेकेंड. मीटर किलोग्राम ये मोटे यूनिट्स है, बड़े यूनिट्स है. एंड सेंटीमीटर ग्राम छोटे यूनिट्स है. So here you have to remember that CGS systems are small systems or small units, and MK systems are bigger units. Everybody understood this, I suppose. So we have two types of systems, and MK system is universally, it in physics MK system is universally accepted. It is universally accepted. मतलब कोई भी कंट्री में फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट करने जाते हो तो वो लोग क्या करते हैं? नॉर्मली फिजिसिस्ट they use MK system. That is the reason why we also call it as SI system. MK system, very important. MK also called as SI system. And what does SI stands for? SI stands for System International System, System International Units, or Standard International Units, or System International Units. What does SI stand for? System International Units or Standard International Units. So this is about units, and the stop here. SST sir?